Assalamu alaikum and welcome to everyone who is watching this video. This will be a presentation marking the hallmarks of scientific research. The subject related is research method and skills. This presentation will showcase the 7 hallmarks of scientific research and go through them one by one in accordance to their chronological order, starting from purposiveness and all the way to the end, which is, I think it is a generalized ability, but I might be wrong. So I will try to incorporate as much English as I can, but in some parts I may use Urdu to emphasize my point. So moving on, the first is a short summary, an introduction. The hallmarks of scientific research encompass a set of essential characteristics that collectively define the rigor, credibility, and reliability of the scientific inquiry process. Basically, the introduction is giving a short summary of what these hallmarks are and what these hallmarks serve a purpose for. These hallmarks are basically there to essentially guide someone who is writing a research paper or a research thesis or an article or anything that involves scientific research to how to navigate their topic in the best way possible. All of the following topics will help a researcher, a student, a professor, a thesis writer, anyone who is writing something that is related to any topic in compiling the best material possible. Now ये होगा कैसे कि जाहिर सी बात है, जब हम इन 7 हॉलमार्क्स को यूज़ करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली उस कंसंट्रेशन पे आ जाएगा जिस कंसंट्रेशन पे जनरल बंदा भी समझ सकता है और एक स्पेशलाइज्ड इंसान अपनी फील्ड में जिससे रिलेटेड हमने आर्टिकल लिखा है वो भी समझ सकता है. तो आगे चलते हैं. सबसे पहले पर्पसिवनेस आती है. पर्पसिवनेस इज बेसिकली द बेस ग्राउंड ऑफ एनी रिसर्च. द रिसर्च टॉपिक जो आपने चूज़ किया है उसका कोई पर्पस फिल होना चाहिए, आपके फील्ड से रिलेटेड या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने चूज़ किया है. हमारे बहुत ही एक डेकोरेटेड कह सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल स्कॉलर और बहुत ही नॉलेजेबल ऑथर जो है जिन्होंने हमारी कोर्स की किताब भी लिखी है, उनका नाम है सर मिस्टर सेकरिन. उनके ही लफ्ज़ों में, द लाइट ऑफ सेकरिन्स वर्क, वी कैन से that purposiveness refers to the state of doing an activity with a predetermined goal. Basically meaning कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है आप उसको किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखना चाहते हो और आपने जो है वो उसको उस डायरेक्शन तक पहुंचाना है. इतने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स होते हैं वो सब पर्पसिवनेस में आते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने किस तरीके से उस टॉपिक को हाईलाइट करना है. टेक्निकली स्पीकिंग, द purpose ensures that the study addresses specific issues and contributes to the advancement of knowledge. आपका जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, जो भी आपने लिखा है, उस चीज़ का कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड में आप रेलेवेंट फील्ड में हैं, ताकि जो आगे उस पेपर को पढ़ेगा उसको पता हो कि भाई इस बंदे ने एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ ये अपना पेपर लिखा था और वो फुली अंडरस्टैंड करने के बाद उसने पेपर लिखा था कि उसका पेपर जो है वो किस हद तक या किस लेवल तक किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकता है. मूविंग ऑन, द सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिगर. नाउ रिगर टेक्निकली refers to 2 things. Those 2 things being whatever you are presenting or whatever you are writing in the paper should be theoretically sound. Theoretically sound से क्या मतलब है यहाँ पे? Theoretically sound से मतलब है कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है वो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंडेबल होना चाहिए, यानी कि उस चीज़ को आप लिंक कर सकें साइंटिफिक सोर्सेज से भी, लिटरेचर सोर्सेज से भी, और जनरली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया. ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जो कनेक्ट ही ना कर पाएँ आप अपने थीसिस में एक दूसरे से. उस चीज़ में रिगर फिर बहुत माइन्यूट या होता ही नहीं है. तो टू अवॉइड दैट हम लोग रिगर अपने रिसर्च पेपर में यूज़ करते हैं. दूसरा पॉइंट रिगर का जो होता है वो आपका होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है आपकी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. अप्रोप्रिएट एज एन जो आपने मेथड चूज़ किया है ऑफ योर रिसर्च, बहुत सारे मेथड्स होते हैं टू कलेक्ट योर डेटा, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, यानी वो आपकी सेलेक्टेड टॉपिक से लिंक होना चाहिए उसका कोई.
ऐसा कोई तरीका ना हो रिसर्च कलेक्ट करने का जिसके अंदर या तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा स्क्यूड आ रहा है, या आपका डेटा ऐसा आ रहा है जिसका कोई आपके सैम्पल साइज से लिंक नहीं बन रहा, यानी कि बहुत अनलाइकली सिनेरियो आपका रिजल्ट आ रहा है जो कि रिगर की प्रेजेंस शो नहीं कर रहा, जो कि क्या कहते हैं एक तरीके से आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो आपकी रिसर्च जो भी आपने की है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा। तो दैट वाज रिगर। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ टेस्टेबिलिटी। अब एवरीथिंग जो आपने इस वक्त तक इस पॉइंट तक प्रेजेंट की है अपने पेपर में, दैट इज़ इन अ स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीनिंग आपने उस चीज़ को एज अ थ्योरी प्रेजेंट किया है एंड यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट कैन बी nullified or it can be accepted. Two things. Testability of data ensures that the scientific method can be applied, enabling researchers to gather evidence through systematic observation or experimentation to either support or refute the hypothesis. जो मैंने point अभी state किया कि जो आपने बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने उस चीज़ को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल फेज के थ्रू गुजारा कि वो चीज़ जो है वो आपको सेंस बना रही है बेसिकली कि आपका जो भी क्या कहते हैं हाइपोथेसिस है वो कितने कितने हद तक अप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सही, दोनों सूरतों में इट शुड बी एबल टू बी टेस्टेड और इट शुड हैव टेस्टेबिलिटी इन इट्स फाउंडेशन। इससे होता क्या है कि क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर किस तरीके से बिहेव करेगा, सो टू फर्दर सीमेंट योर पॉइंट इफ इट इज़ करेक्ट हाइपोथेसिस देन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस मीन्स दैट आपने जो भी कैलकुलेशंस की थी वो इनफैक्ट करेक्ट हैं, एप्लीकेबल हैं, और आपका जो थ्योरी है, सॉरी आपकी जो हाइपोथेसिस है, थ्योरी गलत वर्ड है, माय बैड, थ्योरी इज आफ्टर यू हैव प्रूव्ड द हाइपोथेसिस देन यू गिव अ थ्योरी। सो अप अंटिल दिस पॉइंट एवरीथिंग जो आप कह रहे हैं वो हाइपोथेसिस ही होगा, बट वंस यू एक्सपोज इट टू टेस्टेबिलिटी, उसके बाद अगर तो वो चीज़ प्रूव हो जाती है देन इट इज़ कंसिडर्ड अ थ्योरी। A theory can be applied. A theory is consisted of some variables, some independent variables, some dependent variables, and your job as a tester is to test those independent and dependent variables and the interlink that they have, so that you know whether they perform according to your predictions or not. Okay, moving on, the replicability as it is written here. Replicability is a very important hallmark towards the end of our research, because it simply means कि आपने जो भी काम किया है अपने पेपर के ऊपर वो चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट है, किसी भी इन्वायरमेंट में उस चीज़ को अगर हम टेस्ट करें तो वो कंसिस्टेंट होगी। बेसिकली मतलब ये होता है जैसे कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अब आपने वही सेम एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे इन्वायरमेंट में किया, सिमिलर इन्वायरमेंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि आप आउटलायर्स नहीं चाहते अपने रिसर्च के अंदर, बट आपने सिर्फ एज अ फॉर द सेक ऑफ योर हाइपोथेसिस बीइंग एज साउंड एज इट कैन बी, आपने उस चीज़ को टेस्ट करने के बाद किसी और कुछ और फैक्टर्स के साथ आपने वापस टेस्ट किया, एंड इफ इट कैन बी रिपीटेबल और रेप्लिकेबल, दोनों वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और नए डेटा के साथ मेथड्स शुड बी सेम, मेथड्स ऑलवेज रिमेन सेम, बिकॉज रेप्लिकेबिलिटी का मतलब यही है कि आप वही चीज़ें कर रहे हो जो आपने पिछली रिसर्च नहीं किया था, बशर्ते ये है कि आप उसको एक फ्रेश डेटा पे अप्लाई करो। बिकॉज अगर आपकी थ्योरी या अगर आपका हाइपोथेसिस या अगर आपकी जो भी टेस्टिंग तरीका है वो अगर सही है, सही से मुराद उसके अंदर एरर का चांस जो है वो बहुत कम है, 0.05 से कम है, then your research should be theoretically be able to be replicated anywhere just using different numbers obviously. डेटा वैल्यूज हमेशा हर जगह पे सेम नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उस थ्योरी का क्या कहते हैं रेप्लिकेटिव, उस थ्योरी का जो रिपीटेबल स्टांस है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड एज वी नो कि रिपीटेबल या रेप्लिकेबल कोई भी थ्योरी होती है, जितनी बार वो रिपीट या रेप्लिकेट हो सकती है उतना ज़्यादा वो जो है वो कह सकते हैं आप तरीके से उसका उतना ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, वो उतनी ज़्यादा जो है वो फेवरेबल होती है
टू यूज़ अ गुड वर्ड फेवरेबल होती है, और उस चीज़ पर का फिर उतना ही ज़्यादा फिर वो भी होता है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड भी होता है, रिस्पेक्ट होती है उस चीज़ की, वगैरह 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 एक्सेट्रा. Moving on, precision and confidence, a very very important hallmark and one that people mostly like roll over, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत अटेंशन नहीं दी जाती अनफॉर्चुनेटली. हालांकि रिसर्च इज़ एज गुड एज द वैल्यूज दैट इट प्रेजेंट्स अस, क्योंकि हमें पता है कि हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के बहुत ही स्पेसिफिक डिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत ही स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लाइट में जज कर रहे हैं. देन वी नीड टू हैव द प्रिसाइज डेटा टू बैक इट अप, क्योंकि हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड इन रिसर्च. अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली इतने सिटीज़, अप्रॉक्सीमेटली इतने रिसर्चर्स, इट इज़ अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड, बट इट इज़ एज फेवरेबल एज एनी. इट इज़ रिकमेंडेड इन फैक्ट कि आप अपने जितने भी मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो सब एक्यूरेट टू द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन हो. सही है, यानी कि इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग अ डेटा, द डेटा शुड बी एज एक्यूरेट as it can be. Yeah. And by accuracy does not only mean the value of the data but also the significance of its relevance. The significance of relevance से क्या मुराद है यहाँ पे कि एक डेटा जो है वो आपने अपने रिसर्च पेपर के अंदर एज अ रेफरेंस यूज़ किया, बट वो डेटा जो है वो 50 साल पुराना है. You don't want that because it will not have that precision in it to fully and accurately represent the data that is being used today, because obviously times have changed, टेक्नोलॉजी वगैरह का, कल्चर वगैरह का, और बहुत से फैक्टर्स का जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना इन्फ्लुएंस होता है आपके रिसर्च पे हमेशा. और जिस टाइम एरा के अंदर आप उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम एरा के हिसाब से क्लोजेस्ट टू दैट टाइम एरा अगर आप मटेरियल यूज़ करें तो बेहतर होगा. that is an aspect of precision. Confidence level here meaning the less error you have in your data the better. एक स्टैंडर्ड है किसी भी रिसर्च का कि अगर उस रिसर्च की पी वैल्यू इज़ अ वेरी स्पेसिफिक jargon that is used in statistics and probability, but also in research to identify and indicate the possibility of a data being wrong. So if your data has a 5% chance or a 0.05 p value and it has a value less than that or equal to 0.05, then that research can be considered a confidently precise research as per our teachings. हमारे इंस्ट्रक्टर ने तो हमें यही सिखाया है कि the more confidence level you have in anything the better it is, and by confidence level the level of significance which is related to our softwares as well, and this thing is responsible for keeping track of our whole thesis and to ensure that हमने जो भी काम किया है वो जितना ज़्यादा theoretically sound और practically accurate हो सकता है वो. Coming towards the end, objectivity demands that researchers maintain impartiality and neutrality throughout the research process. A very good topic, especially in a world जहाँ पे आज बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे हमारे नज़रिए हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे तरीके से लोग सोचते हैं. तो रिसर्चर शुड बी unbiased. The word of focus here is unbiased. Unbiased means that whatever you are presenting or whatever you are researching, you look at it through a neutral perspective. Whether or not you are on one side or the other, when researching, you should be on the middle ground. The middle ground is not always available because a number of religious and cultural factors do intervene जब आप research कर रहे होते हो obviously. But मोस्टली अगर आप एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट के अंदर रिसर्च कर रहे हो तो आपका नज़रिया भी न्यूट्रल ही होना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी इन द एंड इट ऑल्टर्स द रिजल्ट्स वेरी सिग्निफिकेंटली. क्योंकि जब आप एक चीज़ को प्रेफरेंस दोगे फिर आप अनफेयरली दूसरी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो. एंड इन रिसर्च ऑल एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड वेदर और नॉट दे आर करेक्ट और नॉट. दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू बी एक्सेप्टेड बाय एनी रिसर्चर, टू नॉट बी बायस्ड and to also not show any preference towards any specific party or any specific ideal, so that whatever he is researching can be as accurate and as
neutral as possible. Last topic I think is generalizability. Generalizability means the extent to which research findings can be applied beyond the specific study context. A very a very research heavy paper can only be understood by those people who have excelled in that field, or are at the top of their field, or are specialization or have specialization in that field. A researcher's aim should not be towards these specific groups of people, but it should be available and accessible and understandable by all genres of people. Whether it is a student, whether it is a teacher, whether it is a professor, whether it is a PhD degree holder, whether they are masters, bachelors, whatever. A journalist, an anchor, anyone who is using information for any purpose should be able to grasp what is your point in your research paper or research thesis. Generalizability addresses that issue in a very keen way, such that when you are using terms which are not specific to your field of study or the field of study in which you have written your paper, then that becomes infinitely easier for anyone to understand. Such that when you are using jargons, then your paper may not be understood by everyone that the paper is read by. And that is a negative point in some aspects, because you are trying to provide knowledge, but you are using such a difficult medium to provide that knowledge that only partially people can understand who are part of your audience, and the information is not useful to all the other people that do not know that specific jargon or do not have any link to that specific field. The summarization of this is, the more your paper is understandable by common people, the better it is. Parsimony, our last topic, and a very important one as well as that. The multiple explanations of theories exist, the simplest one should be preferred. Parsimony basically states that if your research can be proven through multiple different outcomes and multiple different sources and multiple different hypotheses and multiple different theories support your cause, the best way and best outcome to choose out of all of them is to choose the simplest one. Simplest one meaning here which is understandable by a large amount of people, which conveys your topics thoroughly and as you have aimed, and which also provides context to what you were trying to achieve, and is a very good indicator of whether or not you have achieved what you wanted. These four things are statements that parsimony can handle very easily. क्योंकि अगर एक बंदा जो है वो 5-6 अलग अलग तरीके से अपनी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है या अपनी रिसर्च पेपर के अंदर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो 5 अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल्स पे उस चीज़ का आउटकम निकाल रहा है, अगर तो वो 5 अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहा है। तो उस सूरत में उसके पास पाँचों जो आउटकम्स आए हैं वो सारे करेक्ट हैं, बट उन पाँचों के पाँचों को समझने के लिए अलग अलग इंटेलेक्ट का लेवल चाहिए होगा। जब अलग अलग इंटेलेक्ट का लेवल चाहिए होगा, तो रिसर्चर के लिए बेहतर ये है कि वो वाला लेवल चूज़ करे जिसके अंदर उसकी बात हाईएस्ट लेवल वाला बंदा भी समझ ले और लोएस्ट लेवल वाला बंदा भी समझ ले। दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज पार्सनी, ऑल्सो नोन एज ऑकम्स रेजर। ऑकम्स रेजर is a phrase that is used instead of parsimony. Parsimony की जगह अगर जब ये phrase use होता है, इसका basically मतलब ये आप excess unnecessary information को shed कर दें, shed as in SHED, shed. You cut that off because it is unnecessary to your research, and if your point can be proven through the simplest means possible, then use that then use that outcome or that theory or that hypothesis. In the end, I would like to say thank you or arigato, as I am keen in Japanese, so the better it is that I use my limited knowledge in order to persuade the viewer who is watching this video to let him or her know that a researcher should always be willing to accept new information, whether or not it explains
or this satisfies his research or helps him understand the world a bit better. As per my case, arigato gozaimasu or kiete kurete arigato gozaimasu both have a similar meaning. The second one being thank you for listening to me, and miete kurete arigato gozaimasu means thank you for watching. And I hope my point got across to you in the simplest way possible. And I hope that any or every question that you might have related to this is clear up until this point. And if you are to refer to me further, my email and name are as it is. My name is Rayyan Asim. I'm stating this at the last because my point will only be proven correctly if I am able to thoroughly connect with you without stating any of my personal details as to not specifically awaken any bias that you might have towards me. But after going through all of the presentation, if I tell you my name and my details, then that will positively influence, I hope, positively influence whatever it is I was trying to communicate, and that you will see this in a better light.